Hello students, let's see exercise 4.24. Read each statement below carefully and state with the reasons and examples if it is true or false. A scalar quantity is one that is conserved in a process. So here we can say the first statement is what? False. It is not necessary that scalar quantity remains conserved in a process. Remains conserved means remains constant. There is no change in it. Okay. Why? Because in inelastic collision, kinetic energy does not remain conserved. Does not remain conserved. काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन कंजर्व नहीं रहती है। नाउ बच्चों आपको क्वेश्चन होगा ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। सो इन चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर वी विल लर्न दैट व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन इज व्हाट? द प्रोसेस इन विच द काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से कोलिजन during which the kinetic energy does not remains conserved, that collision is called what? Inelastic collision. Okay, so here we can say kinetic energy is scalar quantity and that does not remains conserved during what? Inelastic collision. Now let's see the second one. Can never take negative values means what? A scalar quantity is one in which can never take negative values. So here we can say that temperature is what? A scalar quantity and it can take negative values. So here I can say temperature is a scalar one and it takes negative values. Okay, so this second statement is also false. Okay, now let's see third one. The scalar quantity is one that must be dimensionless. Scalars के डायमेंशन नहीं होता है, स्केलर्स के तो डायमेंशंस होते हैं, मास लेंथ टाइम सब क्या है? स्केलर है, ठीक है, फिर भी डायमेंशंस है. सो हियर आई कैन से दिस वन इज आल्सो फॉल्स. फॉल्स because we can say scalars like mass, length, time are not dimensionless. Okay, now let's say part D. A scalar quantity is one that does not vary from one point to another in a space. Scalar quantities मतलब space पे एक जगह से दूसरी जगह पे अगर वही क्वांटिटी हम लोग देखें तो वैरी नहीं करती है, मतलब उसकी वैल्यू वैरी नहीं करती है. मतलब यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज मैं डेंसिटी कंजर्व करना एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, डेंसिटी है तो स्पेस में यानी कि एटमॉस्फेयर में आप यहाँ पे, ठीक है, ये वाले रीजन में यहाँ पे डेंसिटी मेज़र करो और यहाँ पे डेंसिटी मेज़र करो, ठीक है, तो क्या दोनों जगह पे डेंसिटी सेम आएगी? ठीक है, आपको यहाँ पे बोला है कि डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्पेस, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट एट दिस पॉइंट and at this point, at both this point, the density is same, means density is a scalar quantity, so scalar quantity is same. They said that in the statement said that the scalar quantity does not vary from one point to another point, means density does not vary from one point to another point in a space. But we know that scalar quantity like a density varies from point to point in a space. So here I can say this statement is false because scalar quantities like density varies one point to another point in a space. Okay, now let's see next one. The scalar quantity is one that has the same value for observers with a different orientation of axis. Okay, so here I can say yes, this statement is true. मगर अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले तो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है,
क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन से लेते हैं तो भी क्या उसकी वैल्यू सेम रहती है, सो आई कैन से यस। ओके, अगर किसी बॉडी का मास ऑब्जर्व करो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर है मेजर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन से, तो अभी वो बॉडी का मास क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, सो हियर आई कैन से दिस स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू, बिकॉज द मास ऑफ a body, we know that mass is scalar quantity. Okay, so the mass of a body measured by different observers from different orientations as same value, so I can say this statement is true. Okay, you can also say for time. Okay, the time, okay, at any instant measured by different observer from different orientations as the same value. Okay.